Tutorial number 34. In this tutorial we're talking about the whole command. We going to the sketch, making square or the rectangle, and extrude it with the 50 mm, and we getting this part. We simply taking this and go to the hole. In this command we directly go into the hole command directly, not going to the sketch and making some circles and going to hold it or pocket it. We are directly going to the hole in 3D modeling. So that is the point. We directly इधर अप टू नेक्स्ट मतलब कि आप उस सरफेस तक ही करना चाहोगे या अराउंड द सरफेस करना हो तो ऑल द सरफेस अगर ट्रिम करना हो, मतलब कि थ्रू आउट अगर मारना हो तो आप टू लास्ट बोलेंगे तो आप टू लास्ट पे ये भी काटेगा ये भी काटेगा, या फिर अप टू प्लेन बोलेंगे तो बीच में का प्लेन भी काटेगा, लास्ट का प्लेन नहीं काटेगा। तो अप टू सरफेस बोलेंगे तो वही है। सो मैं अभी वही लेता हूँ टू नेक्स्ट। सो दैट इज़ द पॉइंट and we are constrain the point where which we have to hold. This is the positioning sketch. We going to this and positioning the sketch or constrain the sketch with the horizontal, make it 100 and this point with the horizontal .50. This is the point which we have to hold. So exit the sketch workbench. We here there is the various types of the hole. तो इधर हमको सिंपल टाइप मिलेगा, थ्रेडेड टाइप मिलेगा, टेपर्ड टाइप मतलब कि ऐसे होल मिलेगा टेपर्ड में, या फिर कंट्रोल्ड आई टेकिंग दिस वन, और कंट्रोल शंक मीन्स तिरछा होता है, ज़रा एंगल होता है उसको ऊपर से। तो ये मैं अभी के लिए यही लूँगा कंट्रोल। So 50 mm. So getting the preview. This is the preview of this and go to the threaded one. इधर हम थ्रेडेड भी दे सकते हैं। थ्रेडेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थ्रेडिंग का डायमेंशंस आएगा, भी थ्रेडेड डायमीटर आएगा, होल डायमीटर आएगा, थ्रेडेड डेप्थ आएंगी, थ्रेड की डेप्थ जो है वो, और कोल डेप्थ। तो ये हमें आएगा सब कुछ। तो प्रीव्यू देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे थ्रेड कटेगा, ये एक जो है वो ड्रॉबैक है, थ्रेड दिखाई नहीं देते इसमें। तो थ्रेड भी लगाएंगे हम तो वो सिर्फ इसमें दिखाई देगा हमको। ये थ्रेड हमने लगाए हैं पर वो इसमें नहीं दिखाई देंगे, मतलब कि ड्राइंग में ऐसे एक्चुअल में दिखाई नहीं देंगे। अभी के लिए रहने देता हूँ, या फिर लेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके कर देंगे। तो ये है, देखो यहाँ पे हमारा कंट्रोल होल बन गया। सो आई होप दिस ट्यूटोरियल इज यूजफुल फॉर यू। Next tutorial we talking about the rib. Very interesting topic. See you in the next topic. Thank you.